Hello students and welcome to your maths online class. So my dear students, I hope you must have gone through my previous video in which I have begun your chapter number 1 and I have explained you question number 1, 2 and 3 related to your exercise 1.1. And today I am continuing the remaining question of this particular exercise and I am beginning with question number 4. So students, in question number 4, it is asked to write a pair of negative integers which has the difference as the following. We have to take the pair. Pair means 2. Whenever pair word is there, that means we have to take 2. So we have to take 2 negative integers, and when you will subtract that negative integer, you will get the result in A part as 5, in B part as -2 and in C part as 0. So see students, here I have taken two example to give you the explanation. Okay, you can make your own examples also, means you can take your own values also to find the answer. How? Just see. 5. First of all, just think of two numbers whose difference is 5. पहले आप ऐसे दो नंबर सोचिए अपने माइंड में जिसको माइनस करने पर 5 आता है. So I have taken here two numbers 5 and 10. Okay, and now you have to put negative sign with both these numbers. Why? Because it is asked to write the negative integers. तो जो भी आप दो नंबर्स सोच रहे हैं अपने माइंड में जिसको माइनस करने पर 5 आता है, उसके आगे आपको माइनस का साइन लगाना है. Getting it? Like I have done it. -5 and -10. Now you have to put the smaller negative integer firstly and then the greater negative integer. Okay, according to the rules of integer, this one is greater and this one is smaller because the opposite rules follows in the negative sign. The number which looks greater is actually smaller and the number which looks smaller is actually greater. नेगेटिव साइंस में ये होता है कि जो नंबर आपको देखने में स्मॉल लग रहा है एक्चुअली वो होता है ग्रेटर, और जो आपको ग्रेटर लग रहा है वो होता है स्मॉलर. तो यहाँ पर एक्चुअली दिस -5 इज ग्रेटर देन -10. सो आई हैव रिटन द greater number only here, so -5. Then you have to put minus sign. Why this minus sign? Because we have to find the difference. हमें difference find out करना है. तो ये जो माइनस साइन आपको सेंटर में दिख रहा है ये इस डिफरेंस का साइन है. देन सेकेंड जो इंटीजर है उसको आपको ब्रैकेट में लेना है. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि कभी भी दो इंटीजर्स के साइन साथ में नहीं आते हैं. तो ये जब माइनस के अंदर है तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे. फाइन, वी विल पुट दिस सेकेंड इंटीजर इन ब्रैकेट. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू ओपन द bracket. So -5 minus outside minus inside, so it will become plus 10. Now as per the rule, minus plus is minus, so subtract 10 minus 5 is 5 and the sign of greater integer will come. So the greater is plus, so plus sign will come. See, we got our answer, plus 5. Okay, so this I have taken the one example. Similarly, I am taking one more example here so that you can understand it more easily. Again, you have to think of any two numbers whose difference is 5. ऐसे कोई भी दो नंबर आप सोचिए जिसको माइनस करने पर 5 आता है. तो लाइक मैंने वापस दो नंबर लिए यहाँ पर 3 और 8. जब आप 8 में से 3 को माइनस करते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा 5. ओके, बट वी हैव टू टेक द नेगेटिव इंटीजर्स, सो आई हैव पुट द साइन ऑफ नेगेटिव विथ बोथ द numbers. Now again put the greater one firstly, so the smaller, the number which looks smaller is greater, so -3 you have to put first, then minus sign of difference and then the smaller number which looks greater but it is smaller, so -8. Now in next step, -3 minus outside minus inside plus and then 8. Now minus plus is minus, so 8 minus 3 is 5 and the sign of greater will come as plus. Understood? Now move on to the B part. It's -2. Now we have to bring the result as -2. अब हमें रिजल्ट में -2 लेकर आना है. So see, पहले आप कोई भी दो नंबर्स ऐसे सोच लीजिए जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आता हो. -2 नहीं, 2. आपको ये सोचना है कि कोई भी दो नंबर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आता है. लाइक मैंने यहाँ पे दो नंबर लिए हैं 14 एंड 12, राइट. आप 4 और 2 भी ले सकते हैं. 2 and 4 दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 आता है. बट आई हैव टेकन हियर
-12 एंड -14. पहले हम नॉर्मल नंबर्स आप सोचिए, देन उसके आगे आपको नेगेटिव साइन लगाने हैं. सो -12 एंड -14. Here what you will do, we have to bring the minus sign. So the numbers which is looking greater but actually it is smaller will come firstly and then the greater number will come. पहले 14 आएगा फिर 12 आएगा, बिकॉज हमें आंसर नेगेटिव में लेकर आना है. तो जो नंबर आपको एक्चुअली ग्रेटर लग रहा है आप उसी को सामने लेकर आइए. ओके, सो -14 will come first, then minus sign of difference and then -12. In next step, this minus and minus will become plus and then 12. Now subtract, because minus plus minus, so 14 minus 12 will give you 2, and the greater number is 14. Sign before 14 is minus, so -2 will come, which was asked in the part. Fine. Similarly, I have taken one more example. कोई भी दो नंबर जिनको सब्ट्रैक्ट करके 2 आता हो. सो आई हैव टेकन वन मोर एग्जाम्पल, 18 एंड 20. क्योंकि 20 में से जब हम 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 2. फाइन. अब आप दोनों नंबर्स के आगे माइनस का साइन लगाइए. सो -18 एंड -20. नाउ ब्रिंग दिस ग्रेटर नंबर विच इज एक्चुअली स्मॉलर इन नेगेटिव केस. ओके, तो आप अभी यही सोच के चलिए कि ये है आपका ग्रेटर नंबर. फाइन. When the school will reopen, we will explain this concept again to you all on board. So right now you have to keep in your mind जो आपको greater लग रहा है वही आपको आगे रखना है यहाँ पर. Fine. So -20, then minus sign of difference will come in between, then open the bracket and then this -18 will come inside the bracket. Next step, open bracket, -20, minus outside, minus inside, plus 18. Then minus plus minus, so 20 minus 18 will give you 2, and the sign of greater number, that is 20, so minus sign will come here, so -2. Fine. Now the next part is very simple, 0. So you have to take any two numbers whose subtraction is 0, whose difference is 0. कोई भी दो नंबर सोचिए जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आता है, तो आप कोई भी दो सेम नंबर ले लीजिए. ओके, बिकॉज आप सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट हमेशा 0 आता है. सो आई हैव टेकन हियर 30 एंड 30. 30 minus 30 is 0. Now I have put minus sign with both the 30, -30 and -30. So now here both the numbers are same, so you can put any number anywhere. So -30, then the sign of difference, then in bracket again -30. Next step, open the bracket, minus inside, minus outside, so it will be plus. So -30 and +30. I told you in my previous video, whenever same integers comes with opposite sign, it gets cancelled, or we can write simply 0 here. Okay, one more example I have taken here, 27 minus 27 is 0. So I have put minus sign with both the 27, then -27, minus sign of difference, and then again -27. So minus outside, minus inside, so it will be plus. So minus plus, same integers, opposite sign, cancel, 0. Fine. So this was your question number 4th. See students, it is not necessary that what examples we teachers are giving you, you have to do with those example only. Now you can frame your own examples. Fine. You have understood the concept, so I think now you can do it yourself with your own numbers. Now in question number 5th, it is asked, write a pair of integers which has the sum. In previous question it was asked the difference, but here it is asked the sum as the following. In A part, we have to take two numbers whose sum will become 100, and it is written take a pair of integers. It is not written take the pair of negative integers. Last question में given था we have to take the pair of negative integers, but here it is not mentioned that we have to take the negative integers. That means we can take negative or positive, whichever we want. हम negative भी ले सकते हैं, positive भी ले सकते हैं. See, now the first answer should come as 100 plus 100. Positive का 100 आना चाहिए. So first example I have taken 50-50, because 50 plus 50 is 100. So I have taken both the numbers as 50, and I have to do addition only, so in between I have put addition sign. So 50 plus 50 is 100, and when both the numbers are with plus sign, then in answer also plus sign comes, so plus 100. Similarly, I have taken one more example. Again I have taken two numbers whose sum is
100 मीन्स 2 नंबर मैंने ऐसे लिए हैं जिनको ऐड करके मेरा रिजल्ट 100 आना चाहिए। तो कोई भी 2 नंबर आप ऐसे ले लीजिए जिसका सम तो हमने यहाँ ले ही लिया था 50 एंड 50, यहाँ मैं डिफरेंस के तरीके से भी आपको बता रही हूँ। मीन्स 250 और 150 इसके बीच में कितना गैप है, 100 का। तो आप कोई भी 2 नंबर ऐसे ले लीजिए जिसके बीच का गैप कितना हो, 100 का। ज़रूरी नहीं है 250 और 150 ही लेना है आपको, आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हो, लाइक 350 एंड 250 ले सकते हो आप, कोई भी 300 एंड 200 ले सकते हो, जिसके भी बीच का गैप 100 हो वो 2 नंबर ले सकते हो। लाइक अब क्या करना है आपको, अब आप जो स्मॉलर नंबर है पहले वो लिखोगे -150, बीच में लगाओगे आप प्लस का साइन बिकॉज वी हैव टू फाइंड द सम, प्लस एंड देन द सेकेंड इंटीजर, अगेन it will come in bracket because two signs will not come together, whether it is negative or positive, two signs will never come together. So plus and plus will become plus only 250. Finally minus plus minus. So 250 minus 150 will give you 100 and the greater number is 250. So the sign of positive will come. Here you have to keep in your mind when you will take two numbers, no? Because here we have taken one number with negative sign and one number with positive sign. So where to put negative sign and where to put positive sign? So keep in mind that in answer we want plus sign. अगर हमें आंसर में प्लस का साइन चाहिए तो ग्रेटर नंबर के आगे ही हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। अगर आप यहाँ पर 250 के आगे नेगेटिव साइन लगा देते और 150 के आगे पॉजिटिव साइन लगा देते तो डिफरेंस तो आपका 100 ही आता, आंसर आपका 100 ही आता, लेकिन साइन आपका माइनस का आ जाता, क्योंकि 250 जो है वो माइनस का हो जाता। तो ग्रेटर नंबर के आगे जो साइन होता है वही फाइनल साइन आएगा, राइट? दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आपको प्लस का रिजल्ट चाहिए तो जो आप ग्रेटर नंबर ले रहे हो उसके आगे आपको वही साइन लगाना है जो आपको रिजल्ट में चाहिए। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द सेम क्वेश्चन विथ वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज बी पार्ट। नाउ वी वॉन्ट नेगेटिव इंटीजर। कोई भी दो इंटीजर्स आपको प्लस करने हैं जिसका रिजल्ट माइनस में आना चाहिए, फाइनल आंसर माइनस में आना चाहिए। तो कोई भी नंबर ले सकते हो, यहाँ पर कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं है, हमको आंसर सिर्फ माइनस में लेके आना है। तो लाइक मैंने यहाँ पर 2 नंबर लिए हैं, अब आपको इस यहाँ पे 2 नंबर लेते समय ये ध्यान रखना है कि जो आप बड़ा नंबर लोगे उसमें आपका माइनस का साइन होना चाहिए। लाइक मैंने यहाँ 2 नंबर लिए हैं 25 और 20, तो जो मेरा बड़ा नंबर है वो है 25, उसके आगे मैंने माइनस का साइन लिया है सी। सो -25 एंड की जगह आएगा हमारा प्लस, बिकॉज क्वेश्चन में सम पूछा है, तो प्लस एंड देन 20। ओके, सेकेंड इंटीजर। नाउ माइनस प्लस माइनस, सो 25 में से 20 को माइनस करिए, आपका आंसर आ जाएगा 5। तो ग्रेटर नंबर है 25, देन योर आंसर विल बी -5। फाइन, सी वी गॉट द नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर आ गया हमारा। एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ मिस मैं आपको। लाइक अगेन मैंने 2 नंबर्स लिए, आप कोई भी 2 नंबर ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो नंबर मैं ले रही हूँ वही ले रहे हो। आप 150 190 ले सकते हो 2 नंबर। अगर आप 150 एंड 190 ले रहे हो तो मैंने क्या बताया, जो ग्रेटर नंबर है उसके आगे आपको नेगेटिव का साइन लगाना है, ये ध्यान रखना है। तो ग्रेटर नंबर के आगे हमने नेगेटिव का साइन लगाया और स्मॉलर के आगे हमने पॉजिटिव का साइन लगाया। अब आप इसको सॉल्व करिए, 150 प्लस करना है, सम करना है हमें इन दोनों नंबर का, तो बीच में प्लस का साइन, देन -190। फाइन, नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, 150 प्लस आउटसाइड माइनस इनसाइड, सो -190। अब आप ये प्लस है, कोई साइन नहीं मीन्स प्लस, सो प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे आप तो आ जाएगा माइनस का 40, बिकॉज 190 बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। गॉट इट? एंड द एग्जाम्पल विच आई हैव टेकन हियर, -100 एंड 90, 2 नंबर मैंने लिए वापस यहाँ पर, तो जो मेरा ग्रेटर नंबर है उसके आगे मैंने माइनस का साइन लगा दिया, तो -100 प्लस 90, एंड की जगह प्लस आ गया, देन माइनस प्लस माइनस, 100 माइनस 90 इज 10, ग्रेटर नंबर इज 100, सो माइनस साइन। फाइन, सी पार्ट, इट इज वी वॉन्ट द आंसर एज 0 आफ्टर एडिंग इट, एडिशन के बाद हमें आंसर 0 चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, सेम नंबर लेने हैं आपको, एक नेगेटिव होना चाहिए एक पॉजिटिव होना चाहिए 0 लाने के लिए इसमें। तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिए हैं 20 20, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सो 20 -20 एंड की जगह +20, सो -20 + 20 सेम नंबर, ऑपोजिट साइन 0। Similarly, I have taken example here 45 and -45. Okay, here I have taken negative
firstly and then positive. So I have taken one more example where I have taken positive firstly and then negative. Any same numbers you can take. So I have taken the next example as 45 and minus 45. So 45 in place of and will come plus and then minus 45. Next step, open the bracket. So plus minus 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 45. Plus 45 minus 45. Same integers, opposite sign, cancel, answer 0. Fine, students. So this was your question number 4th and question number 5th. Now I am explaining you question number 6th. In question number 6th and question number 7th, you have to be very careful, students. So please pay attention properly in these two questions. What we have to do, read the question properly. Subtract the sum of 38 and 97. It is written sum of 38 and 97 from 237. So this is the question, right? This is the question. अब आपको ध्यान रखना है फ्रॉम के बाद जो वैल्यू होती है सबसे पहले हम वो लिखते हैं, राइट? सो सबसे पहले आप इस 237 को लिखिए, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को आप पहले लिखिए, और हमें क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, सब्ट्रैक्ट. सो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को लिखने के बाद आप माइनस का साइन लगाएंगे, देन सम ऑफ दीज टू, इन दोनों का सम. तो एक ब्रैकेट बनाइए, उसमें आप इन दोनों का सम करेंगे. ये बन गई आपकी इक्वेशन. पहले आप इक्वेशन फ्रेम करिए, फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा. वापस देखिए, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस. तो रूल के अकॉर्डिंग फ्रॉम के बाद वाला नंबर हम पहले लेते हैं, तो पहले हमने फ्रॉम के बाद वाला नंबर ले लिया, देन सब्ट्रैक्ट, सो माइनस का साइन, देन सम ऑफ दिस एंड दिस, तो 38 प्लस 97. नाउ इट इज़ वेरी सिंपल, स्टार्ट सॉल्विंग इट. 237 will come as it is, minus, solve the bracket, add these two number. When you will add 38 and 97, you will get 135. So write down 135 here, and at the same time you can open the bracket also. And then finally subtract it. So plus minus, because it is no sign is here, so it is plus and minus. So plus minus I told you is minus. So 237 minus 135 will give you 102. And here the greater integer is 237, and before 237 plus sign is there, so in answer also plus sign will come, and this will be your answer. Fine. I hope now this is clear to you. Now pay attention on next question also. It is given subtract minus 48. What is given? Minus 48 we have to subtract from the sum of minus 34 and minus 49. See, this is the question. We have to subtract this minus 48 from the sum of minus 34 and minus 49, right? So from के बाद में क्या है यहाँ पर, मैंने क्या कहा आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कि फ्रॉम के बाद में जो वैल्यू है सबसे पहले आप उसको लेकर आइए. तो यहाँ देखिए आप कि फ्रॉम के बाद में आपके पास में क्या है, इस क्वेश्चन में फ्रॉम के बाद में आपके पास है सम ऑफ 34 माइनस 34 एंड माइनस 49. तो सबसे पहले आप इस वैल्यू को आगे लेकर आएंगे, ये वैल्यू आगे आएगी, जो भी फ्रॉम के बाद में है वो पहले आएगा. तो आप एक ब्रैकेट बनाइए, क्योंकि हमें इसका सम करना है. तो देखो, पहले आप लिखोगे माइनस 34, एंड की जगह आएगा, सम है ना, तो एंड की जगह आएगा प्लस, देन माइनस 49. सो सी, वी कैन नॉट पुट टू signs together, so I am putting this also in bracket, and then I am closing the big bracket. Firstly big bracket, minus 34 sum, and in place of and will come plus, then minus 49, right? Then subtract करना है हमको, तो अब इस bracket के बाद आएगा minus, और from के पहले क्या वैल्यू है, minus 48, तो एक और bracket बनाओगे आप और लिख दोगे minus 48. Got it, student? See, the main thing is to frame the equation. एक बार अगर आपने equation frame कर ली, then the question will be very simple for you. Read the question and according to that you frame the equation. Subtract minus 48 from the sum of minus 34 and minus 49. Fine. तो from के बाद में आपकी value है sum of this and this. So firstly bring this value firstly. Fine. So make the bracket minus 34 plus, बिकॉज इट इज सम, प्लस का साइन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर सम बोला है, तो प्लस, देन सेकेंड इंटीजर इज माइनस 49, क्लोज द ब्रैकेट,
subtract. So in between minus sign will come, and what we have to subtract? We have to subtract minus 48. So again one bracket will come because two signs we cannot put together. This sign is of subtraction, center sign, and this minus 48 is as it is given in the question. Okay, now I hope it is clear. Now I am starting solving it. So see, first of all I will solve this bracket. So because it is having double bracket, so open the bracket, write down minus 34 plus outside minus inside. So plus minus is minus, minus 49. Okay. Here also you can solve minus outside minus inside. I told you in yesterday's video that if minus outside and minus inside, then it will directly become plus 48. Now in this bracket both the values are with minus. So minus minus plus, but sign minus. So add 34 and 49, you will get 83. But the sign of minus will come, minus 83 plus 48. Then finally minus plus minus. Okay, so for 83 minus 48 will give you answer 35, but the sign of greater number will come. So the greater is 83, 83 के आगे sign है minus, so final answer आ जाएगा हमारा minus में. So this will be your answer. Fine students, I hope now this 6th and 7th question is very clear to you. Please solve it yourself so that the things will be more clear to you. When you will do the written practice, then it will be very much clear to you. Now move on to the next question, that is question number 8. Here we have to find the additive inverse. Additive inverse is very simple. Inverse, the word inverse means opposite. आप inverse का ध्यान रखिए. Inverse का मतलब होता है opposite. अब यहाँ पे क्या ऑपोजिट? एडिटिव इनवर्स. तो ऑपोजिट साइन, यहाँ पे आपको ऑपोजिट साइन करना है. मीन्स अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव में है तो आपका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा. तो सिंपल एडिटिव इनवर्स मीन्स ऑपोजिट साइन. ओके, नाउ सी, प्लस 90, सो आंसर विल बी माइनस 90. minus 37, answer will be plus 37. 0, as I told you in my previous video that 0 is only 0. इट इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगा, इसके साथ में कोई साइन नहीं लगेगा. हेयर द क्वेश्चन इज गिवन इन नेगेटिव, सो आंसर विल कम इन पॉजिटिव. minus 1908, so answer will be plus 1908. Next, the question is given in positive, so answer will come in negative. Last, the question is given with negative, so answer will come with positive sign. Fine students, so this was your question number 4th to question number 8. So today I am explaining till here only. Now the remaining question of exercise 1.1 I will be explaining in my next video. So stay tuned for my next video in which I will explain you the remaining questions. And remember, you have to learn these rules. Keep on repeating these rules. Then this integer chapter, just believe me, this integer chapter will become very simple for you if you remember these rules of sign. Fine. So please learn these rules and keep on repeating it in your mind so that the simplification of integers will become very simple for you. Okay students? So that's all for today's video. Meet you all in next online class. Till then, take care of yourself. Thank you students.